गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्रांशु। गुड मॉर्निंग सर। यस, ये कल एडमिशन जो था ये वो वाला पेशेंट है? हाँ सर। अच्छा, क्या पेशेंट है ये? सर ये पेशेंट है 80-year-old मेल है। कल आया था, फीवर, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और ब्रेथलेसनेस के साथ। सर ऑन एडमिशन आते ही इसको इंट्यूबेट कर दिया गया था। अच्छा, पास हिस्ट्री है क्या कुछ? हाँ सर, नोन केस ऑफ सीओपीडी है सर, 20 साल से। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल एडमिशन है, 3 बार इंट्यूबेट हुआ था और 3 बार एक्सट्यूबेट भी हो गया था। ओके, अभी लैब्स कैसे हैं? सर अभी काउंट्स उसके बढ़ते हैं, सेप्सिस में है, 33,000 है, और शॉक में भी है, और उसका BPNR है, फुल आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे है सब। Right. उसका प्लेटलेट काउंट भी ड्रॉप हो रहा है। यूरिया ग्रेड कैसे? यूरिया 200 है, क्रिएट 5.6 है। ओके, आउटपुट है क्या? नहीं सर, कल से आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है। राइट, आपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, उनका क्या ओपिनियन है? नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था सर। उनका ऐसा बोलना है कि अभी डायलिसिस की जरूरत नहीं है, पहले शॉक को ट्रीट करना है, पेशेंट शॉक में। राइट, एबीजी कैसा? सर एबीजी भी सर अभी भी इंट्यूबेट करने के बाद उसको सीओबी रिटेंशन है, इससे राइट, एक काम करिए, आई थिंक यू शुड स्टार्ट हायर एंटीबायोटिक्स, but in summary this patient is a 85 years old male and he's a known case of COPD, right? He has been had multiple admissions in the past and has been intubated as well before. Yes sir. Now that multiple organs are being involved, the patient is going in multiple organ failures. I think the prognosis is poor. We should first talk to the relatives about the further management. Yes. भूषण के रिलेटिव्स को बुलाना था। भूषण पेशेंट के नातेवाईक, भूषण सबने बुलाया। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ है और मैं आपके पेशेंट को देख रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आप जब कैजुअलिटी में पेशेंट को आप लेके आए थे तो उनको रेस्पिरेटरी फेलियर था, छाती का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हमने उन्हें कैजुअलिटी में इंटीबेट किया था। उनकी हालत काफी गंभीर है, तबीयत खराब है, इस बार उनकी जान को धोखा है। सर जब पहले भी इनको 3-4 बार ऐसे हुआ है, पहले भी वो इंटूबेट हुए थे और एक्सटूबेट भी हो गए थे और ठीक होके घर गए थे। अब क्या हुआ है सर? आपकी बात ठीक है, पर इस बार उनकी छाती में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, काउंट्स बहुत बड़े हुए हैं और साथ ही साथ बाकी ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी ऑर्गन फेल होना शुरू हो गए हैं। आपने जो बताया कि पहले भी भर्ती हुए थे, कितनी बार ऐसा हुआ है कि भर्ती हुए थे? पहले 4 से 5 बार तो ऐसे हुआ है सर। जी, पर कैसा है इस बार अलग है ये। हम जो इस टाइम पे जिस स्टेज में है, ट्रीटमेंट अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो उससे हम उनका पेन ही बढ़ाएंगे। बेसिकली वो सपोर्ट सिस्टम पे ही सरवाइव कर पा रहे हैं। तो अभी कुछ नहीं हो सकता सर, ऐसा है कि मेनली हम बस उनको पेन ही दे रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। आगे का ट्रीटमेंट अगर हम कंटिन्यू करते भी हैं तो ट्रीटमेंट फ्यूटाइल होगा। ठीक है सर, आप जैसा करते हैं वैसा चालू रखिए सर। ठीक है, मेरे ओपिनियन में हमें धीरे से उनका जो सपोर्ट सिस्टम है धीरे धीरे उसको विड्रॉ करना चाहिए, जिससे कि फिर आगे जैसे होगा हम देख पाएंगे। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। So, in the series AETCOM series of clinical snippets, the drama or the role play we saw now, what does it suggest, or what is the take-home message from this role play as far as bioethics and attitude ethics and communication is concerned? What was the story? It was a beautifully depicted story in the role play that a terminally ill patient, a known case of chronic obstructive airway disease, very elderly, recurrent attacks, terminal end-stage COPD, with history of recurrent infections, recurrent attacks, recurrent admissions. 2 to 3 times she had been intubated and again extubated, again readmissions, and this time when she was admitted, again mechanical ventilation was done, and as per the reports in the drama, there was overwhelming sepsis, multi-organ dysfunction syndromes.
So every organ has been involved and already intubated, mechanical ventilation, overwhelming sepsis, shock on inotropic supports. So this is a background of a patient. What is the clinical decision now? Should we go on treating this patient? Should we go on investing and try to achieve some miracle? So this is what the concept in clinical medicine comes in, is futility, from the term futile. Whatever you will do, as far as, even if the science has advanced, still we are still biologics, we are still mortal, and in this clinical scenario, whatever investments or whatever you will in clinical interventions you are going to do, it is futile. It is unnecessarily prolonging the suffering of the patient. We are not achieving anything. So here the word futility comes, and nowadays the word futility has been replaced by a word which is known as clinically non-beneficial interventions. Whatever interventions we are going to do now in this scenario, it is all going to be non-beneficial, and it is actually futile because already the patient is having end-stage pulmonary disease and overwhelming sepsis and multi-organ failure. So here what should a physician do? The physician, along with continuing whatever support, the physician should talk to the relatives. The physician will talk to the relatives. He will try to, in a calm, composer, empathetic manner, he will explain everything. That actually what we are going to do now is already, it will be only prolonging the suffering of the patient. We are not going to achieve anything clinically beneficial. And so that all these supports should be withdrawn. And whatever the process is, the relatives will be calmed, composed, told everything, and this process should be in a good manner. Terminally, gradually it should be withdrawn. This is what in this role play we wanted to show you what is futility and what is, in a scenario of clinically non-beneficial interventions, should be done or not, should not be done in a futile case.